Hi everyone, I hope you are well. I am Sandeep and most welcome again at this YouTube channel officially Sandeep. I hope you are doing well and you are thinking well. So in this video we are going to talk about if you are a learner, if you want to speak English, how you can speak and how you can speak fluently between of people, how you can speak on the stage without hesitation. Because recently I am coming a speech in my college who I have studied क्लास 12th ऑन द इंडिपेंडेंस डे। क्लास 12th में जहाँ पर मैंने अपना क्लास 12 पास किया है वहाँ पर मैं इंडिपेंडेंस डे पर एक स्पीच ला रहा हूँ जो कि इंग्लिश में ही है। आई हैव ग्रांटेड परमिशन ऑफ माई टीचर, मैंने अपने टीचर से बात कर लिया मेरे दोस्त। दे हैव प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड आई विल मीट यू बेस्ट, आई विल मीट यू एंड आई विल गिव यू बेटर कंटेंट। व्हाट आई एम सेइंग नॉट नथिंग, नो बोल क्या रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू गिव स्पीच ऑन द इंडिपेंडेंस डे 15 of August and why our country people celebrate इंडिपेंडेंस डे। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और इस पर मैं इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच लाने वाला हूँ कॉन्फिडेंटली, लेकिन सब हेजिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन क्रिएट इन माई माइंड कि मैं क्या फील करूँगा डेट प्लेस, बिकॉज टीचर भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे एंड व्हाट वुड आई गेट स्पीक। लेकिन डियर हिम्मत, आई एम कलेक्टिंग समथिंग, कुछ साहस जो मैं अभी इकट्ठा जोड़ रहा हूँ एंड आई होप आई विल गिव बेटर ऑफ माई सेल्फ, आई विल गिव बिकॉज वी हैव मेट अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम गिविंग स्पीच ऑन द स्टेज, सो आई विल गिव एंड आई विल think, I have to think it. And so let's come to start my dear friend, because we are talking how we can speak English। spoken classes आपने ज्वाइन किया होगा, speak English, speak English my dear friend, speak English। हम बात करेंगे इस वीडियो में, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पोक, हाउ टू स्पोक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोलें, हाउ टू स्पोक इंग्लिश। माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट वॉच क्लियरली दिस वीडियो। यदि आप एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं, यदि आप एक लर्नर भी हैं, तो दिस वीडियो इज हेल्प यू मोर टू मोर एंड यू मस्ट वॉच क्लियरली इन दिस लास्ट। हाउ टू स्पोक इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट बिकम टू मी इफ वी आर गोइंग टू गिव स्पीच ऑन द स्टेज ऑन एनी वन इवेंट वी सेलिब्रेट। वी थिंक दैट वी आर थिंकिंग बिफोर, हम लोग पहले सोच लेते हैं आई एम नॉट केपेबल टू डू, हम बोल नहीं पाएंगे, लॉट ऑफ स्टूडेंट होंगे, टीचर भी होंगे उसमें, पेरेंट्स भी होंगे एल्सो चीफ गेस्ट भी होंगे। वी आर सराउंडिंग ऑफ माई माइंड एंड वी गिव प्रेशर थिंकिंग एट दिस टॉक which we are feel nervous, which we hesitate at this talk my dear friends। I am saying right, you must watch clearly in this video, I hope you will get better response to me if you are a learner, if you want to speak English fluently between of people। because my dear friends, when I start making video is long 30 मिनट का चला जा रहा है, 28 मिनट 24 मिनट 20 आई मीन 20 के ऊपर ही रहता है, लेकिन मैं ऐसा इस बार नहीं करूँगा क्योंकि व्यू नहीं आ रहे हैं because people are not people watching but someone watching, and I hope if you are watching this video you would get better response to me। I am talking how to speak English my dear friends, most important spoken English। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हाउ यू कैन स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू थिंक vocabulary word, you have to think how you can make sentences, how you can make sentences my dear friend, yes, sentences, how you can make sentences, how you can think in your mind। we have to speak openly between of people। if you have not meeting as surrounding, as environment, as atmosphere, I think that my dear friends, I think that you are feeling nervous। लेकिन क्या कहते हैं, if you want to speak English fluently we have to need conversation my dear friends, conversation, it is the most important। but if I belong as a place who
will provide opportunity to speak English. कौन हमें देगा ऐसा? बहुत से ऐप्स हैं, आप यूट्यूब पर चले जाइए, ओनली यू हैव टू राइट हाउ टू स्पोक इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश. They are providing to you better content, better opportunity, someone, and you think, I find to you many people are joining YouTube channel, they are teaching there. You must know at this talk. And we are talking how to spoke English, my dear friends. We are focusing them. You have to need, I am talking 5 talk to you, my dear friends. You have to focus only. आंखें लाल है ना, तो सन ग्लासेस भी है हमारे पास. यस, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं. वी आर फर्दर समथिंग. माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सेइंग टू यू how we can speak English and how we can speak English fluently between of people, between of public. If each crowd lot of us, ये ज़्यादा भीड़ है तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे, आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं. लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा मेरे दोस्त, ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट, बहुत ज़्यादा हो गया. एंड यू कैन सी टू मी, स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड्स रीडिंग. रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स, रीडिंग. जो रीड करते हैं, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग. अब जो रीड करते हैं, जो आप पढ़ते हैं उसको लिखते हैं, और जो लिखते हैं उसको क्या करना है, आपको बोलना है, स्पीक करना है. अब जो स्पीक करते हैं, यू हैव टू डू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू डू प्रैक्टिस. इट इज ए की, it is a key for to you for spoken English. You must know at this talk. You must know at this talk, my dear friends, if you want to go speak English. Reading, writing, speaking, I am doing practice. How much you will do practice, my dear friends, I think that how much you can make better yourself. You must know that at this talk. And what become to me when we are talking of people, when we are talking of people, we hesitate, hesitate, hesitate at this talk. I am not capable to speak. I am not capable to speak. You can see, and why we are thinking as, because if we want to improve our communication skill, if we want to improve ourselves, if we want to speak fluently between of people, my dear friends, we have to need know our weakness, our strongness. What is weakness and what is strongness? Who is in our inside, जो कि मेरे अंदर में क्या क्या weakness है और क्या strongness है. We have to know. How you would know your strength? How you would know your strength, my dear friends, your strength? Because you have to recognize at this talk, you have to give time along yourself. I think that everyone go to mature in this age when they passed class 12. I think that everyone इस मॉडर्न युग में सभी लोग फ़ोन चला रहे हैं, लेकिन डू नो व्हाई दे आर यूजिंग देयर फ़ोन? वो लोग अपने फ़ोन को कहाँ यूज कर रहे हैं? सभ्यता कहाँ है? लोग कहाँ है? ऐप कहाँ है? I hope you are getting understand what I am want to say to you. If you walking, if you are going to walk, swipe Instagram, swipe Facebook, so many types knowledge you have to meet there. But you must think, my dear friends, you must think what you gain, in your life, what you gain in your life. नॉलेज तो सभी देते हैं, सभी प्रकार का. डांसिंग का वीडियो भी आता होगा, हर टाइप का वीडियो आपको मिलेगा सोशल मीडिया पर. और यदि कोई इफ समवन आर मेकिंग innocent at this talk taking, so you must know that at this talk he know everything. वह सब कुछ जानता है, but he is ignoring. And I am already saying to you, my dear friends, if you want to success in your life, you have to need, my dear friends, you have to need how much you can better in your life, how you can think better in your life, how you can grow,
how you can develop develop your mindset my dear friends, you have to know if you want to do, क्योंकि मेरा कैमरा भग रहा है और इसको मुझे सीधा करना पड़ेगा. If you want to do better response, if you want to gain better in your life, you must know that what you can change, there is no one can change. What you can do, there is no one can do. You must to think, but don't pride at this task. इस बात पर कभी भी घबराहट मत करना कि only you are king in your field. Lot of people you would see, आप कई लोगों को देखेंगे, क्योंकि दुनिया में मेरे दोस्त गेम प्लेयर की कमी नहीं है. इसलिए लाइफ में गेम चेंजर बनो. यू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ. हो इफ यू आर गोइंग टू स्पीक, इफ यू आर watching to you, there is no ignore to you. I am saying my dear friends, you must to develop at this language, and English is the most important for to you. English is the most important, I think here English, yes, English is the most important for to you. English ENGL गायब करते देख लिया. English is the most important. IMPORTANT. English is the most important for you, my dear friends. If you are going visit for another country, if you are going visit for another state, I think that it is a international language, and you must know at this time. You have to focus yourself. And हम देखिए मेरे दोस्त, if are you watching to me, you are thinking how I am getting speak fluently, but I would like to say, my dear friend, there is no one who knows everything, but he learn slowly. क्योंकि हर कोई धीरे धीरे सीखता है. क्योंकि लाइफ में वी हैव नॉट टू वैकेंट, हमें खाली नहीं रहना है. यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, यदि हम वी आर टेकिंग आवर डिग्री, इफ वी आर डूइंग at home, we have to give time proper at my knowledge, how we can grow our mindset, how we can think lot of first about myself. So I think that after some time what become when we are speaking English in my village, people are not getting understand what am I saying. जब मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, तो क्या होता है, कुछ लोग हमारे गांव के ही इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं. इसलिए आई एम गेटिंग स्पीक इनटू हिंदी. इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ थोड़ा क्या बहुत बोलता हूँ, क्योंकि हिंदी आवर नेशनल, हिंदी आवर मदर टंग, एंड हु वी मस्ट स्पीक ऑलवेज. We don't forget at this talk, my dear friends. If you want to success in your life, I am making video already to you. How to succeed in your life? I have written UPSC, IIT, and NEET student. If you want to gain better response in your life, how to succeed in the life, I have already made the video at this topic. You must watch clearly at my YouTube channel, officially Sandeep, and also you can, if you are watching at my Facebook page, you can share my video, because हो सकता है किसी का भला ही हो जाए. So I'm not saying I am selfish कि आप मेरा सपोर्ट ही कीजिए, मत कीजिए मेरे दोस्त, लेकिन आपको लगे, if you are thinking that at this talk you can learn something here, you must do something. What become, someone are coming at my video and they are watching, ignoring. चलो होगा, कर रहा है बंदा कुछ लाइफ में, एंड someone is as टाइप इतना सिंपैथी देते हैं मुझे कि लगे रहो दोस्त, लाइफ में सफलता मिलेगी. बट दे डोंट नो डेट हाउ एम आई टेकिंग सिंपैथी ऑफ आउन सेल्फ. कितना मैं अपने आप से सहानुभूति ले रहा हूँ मेरे दोस्त. यू मस्ट नो डेट एट दिस टॉक. एंड आइए कुछ और रोचक तथ्य जानते हैं इस अंग्रेजी बोलने के लिए. अंग्रेजी कैसे बोलें मेरे दोस्त, अंग्रेजी कैसे बोलें. ये हो गया आपका प्रोग्राम, अंग्रेजी कैसे बोले. सभी के माइंड में यही चलता है. यदि आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो अपने स्किल पर काम करना शुरू कर दीजिए. यू मस्ट स्टार्ट वर्क एट योर स्किल इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ. एंड
स्टोरेज को देखते हुए, क्योंकि मेरा स्टोरेज ज़्यादा ना हो करके कमी है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा इस बार। पिछली बार मैंने 30 मिनट का वीडियो बनाया था एंड विच आई एम नॉट मेकिंग वीडियो lot of long and I hope you will get better response if you are watching at my YouTube channel। तो मेरे दोस्त, आप अपने कमेंट को, आप अपने थॉट्स को हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, what do you want and what do you want to speak, what people are thinking about you, don't ignore them। if you want to get better response in your life, you must know at this start। I hope you will get better response। एंड ये वीडियो आगे बढ़ता जा रहा है समय को देखते हुए दिस वीडियो आर इंक्रीजिंग वेरी फास्ट एंड हेजिटेशन फ्रस्ट्रेशन इज क्रिएटिंग ऑलवेज व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो वी मस्ट इग्नोर ऑल ऑफ देम if you want to improve our communication skill, my dear friends। and I would like to say, if I stay patient around yourself, you always put sunglasses on your eye। अपने आंखों पर चश्मा लगाएं यदि इस प्रकार का मरीज दिख रहा है, आंखें लाल हैं क्योंकि आई फ्लू बढ़ रहा है। और मार्केट में मेनी टाइप ड्रॉप इज अवेलेबल, यू कैन टेक एंड यू कैन सेव योर सेल्फ एंड आई होप यू विल गेट बेटर। आई होप you are getting understand of my tongue, my dear friends, and you must do work at yourself, how you can change your entire life, how you can change yourself, how you can change your every situation, how you can change your direction, situation, and how you can change yourself, because I am already say education is the most powerful weapon who change the world। education is the most powerful weapon who change the world। education is the root, education is the root, my dear friends, is the root। education is the root who change the life, who change the world, who change the life, who change the world, who change the world, who change the life, who change the world। You must know that at this time, you must know that at this time, who change the life, who change the world। but someone is become how much innocent, my dear friends। जो लोग, कुछ लोग इनोसेंट, जो मासूम देखते हैं उन्हें कितना इनोसेंट समझ लेते हैं, हाउ दे आर गेटिंग अंडरस्टैंड इनोसेंट। लेकिन जब इंसान एक बार धोखा खाता है, 2 बार धोखा खाता है, तो बार बार धोखा नहीं खाता मेरे दोस्त। यू मस्ट नो डेट एट दिस टाइम, यू मस्ट नो डेट इन हिज लाइफ ही व्हेन ही नो हिज पोटेंशियल, हाउ ही कैन डू, वो अपने जीवन में क्या कर सकता है, जब उसे एहसास हो जाता है ना, तो ही इज वर्किंग एट ऑन सेल्फ, वो अपने आप पर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। यू कैन सी मैनी एग्जाम्पल ऑफ UPSC स्टूडेंट, जो लोग फॉलन इन लव, ब्रेक, जो लोग प्यार में पड़े और टूटे, दे आर क्रिएट UPSC। यू मस्ट नो डेट at this time and hope you will get better response। and we are finishing this video and completed। I hope you will get better response। if you are watching at this YouTube channel, you can subscribe, and if you are watching at my Facebook page, you can share, you can like, and you can keep your thoughts in this comment box। love you, all of you, and I hope you will get better response। thank you and taking save yourself, love you।